Hello guys, I hope I'm live. How are you guys? And I hope you I hope you saw the previous videos. I hope you're seeing all the PYQs videos that are coming up of whatever subject that you want to give CUET in. And I hope these videos are helpful for you as well. Do you want me to speak in Hindi? आप क्या आप चाहते हो मैं हिंदी में बोलूं? देखो मैंने ये पहले भी बोला है कि अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर हम एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तब मैं उसका हिंदी वर्जन नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस हिंदी में करूँ या फिर समझाऊँ या एक्सप्लेन हिंदी में करूँ, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए यू विल हैव टू टेल मी बिफोर, चैट पे बताना पड़ेगा कि हिंदी में बात करनी है। अच्छा, एंड 8:15 हो रहे हैं, तो जैसे हम हमेशा वेट करते हैं 2 मिनट और लोगों को भी ज्वाइन करने का टाइम देने के लिए, हम वेट करेंगे फॉर 2 मिनट्स एंड हम 8:17 पे स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो आज बारिश का मौसम हो रहा है, तो लाइट का प्रॉब्लम है, तो प्रॉबली बंद हो सकता है अब्रप्टली। सो मैं पहले आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड दैट देर आर चांसेस दैट द लाइफ is abruptly ended. ठीक है।
Okay, so let's start. Hello everyone. I hope that I'm audible to you and I'm visible as well and मतलब live है ना? Okay, so let's start. With this. Yep, so before starting on, let me just quickly introduce myself. I'm Aarushi Anand and I'm from Hindu College and I'm currently doing BSc Zoology Honours. I'm in my first year. I have 100 percentile in three subjects: bio, chemistry, and bio for psychology and English, and around 99.8 in physics and 99.8 in chemistry as well. So, like I've said before, mock test series of exam factors is there on their website. And why is this beneficial for you guys? Because it's very good for practice. और आपको बहुत ज़्यादा strategize and time management वगैरह करने की ज़रूरत है, which would be helpful if you do this mock test series. ठीक है, and these are available for the subjects that are there on your screens. And if you, I mean, you can do it for yourself and you can recommend your friends also for the other subjects. Then they have a crash course in which they have one short video lectures for a particular chapter of a subject. ठीक है, उसमें you can have these crash course. These are available in accounts, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, political science, English, and general. And general test का crash course would be very beneficial if you guys want to do it. And इसको मतलब एज अपनी लाइफ का सिर्फ एक मकसद मत बना लेना जनरल टेस्ट करना है, इसलिए क्रैश कोर्स कर लो, छोटा सा होगा, जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा एज टू व्हाट यू नीड टू डू इन जनरल टेस्ट. ठीक है. So yeah, these were some questions that we've already discussed. And आजकल हमने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया questions डिस्कस करने का. अब हम आई हैव मेड दिस डॉक्यूमेंट जिसमें questions होते हैं. क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता that I make a PPT out of it, so I just end up using the doc only. ठीक है. So now we'll start with this question. एक second. I'll just, yes. So question number 1 on your screens. Succession occurring after flood is succession occurring after flood is. अब इसमें सारे एस्पेक्ट्स का सोचना. ठीक है, कि हाइड्रार्क क्या होता है बेसिकली. ठीक है, after flood we are talking about, is it going to be a primary succession or a secondary succession, a hydrarch succession or a mesarch succession? I want answers in the chat. I hope you guys are understanding कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, and these PYQs are beneficial for you guys. Those who are joining right now, I want to tell you that right now we are doing the first question. And first question का आंसर मैंने पूछा है कि क्या होगा.
Wait, I'll just come in a second. Yeah, so let's discuss this question now. तो हम बात कर रहे हैं फ्लड्स की, सक्सेशन अकरिंग आफ्टर फ्लड्स. नाउ व्हाट आर फ्लड्स? फ्लड्स आर बेसिकली व्हेन, देखो जैसे आप मान लो आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया में फ्लड्स आ गई, ठीक है, देयर विल बी वाटर एवरीवेयर एंड सब खत्म, मतलब सब डिमोलिश हो जाएंगी बिल्डिंग्स एंड स्टफ. सो एवरीथिंग वुड बी बैरन आफ्टर अ पॉइंट इफ अ लॉट ऑफ फ्लड्स हैपन, राइट? बहुत बुरी तरीके से फ्लड्स आए तो सब खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर मे बी 10-20 years सब डिकम्पोज हो जाए, ठीक है. एंड फ्लड के बाद वुड इट बी अ प्राइमरी सक्सेशन? नो, राइट? It wouldn't be a primary succession, right? And hydrarch succession and mesarch succession are examples of primary succession itself. So uh, tell me if I'm wrong. I am saying if it's not primary succession, not 1 degree लिख रही हूँ, succession, then it's not hydrarch, then it's not hydrarch and mesarch. वैसे hydrarch and mesarch होते क्या है? What is hydrarch and what is mesarch? So hydrarch is when there's a lot of water and वो floods को थोड़ा justify करता है, लेकिन हम secondary succession, this the right answer for this is secondary succession, that's why hydrarch का जो option है that cancels out. So this becomes the correct option. ठीक है ना? Everybody is agreeing to this? Okay, so moving forward, question number 2. Identify the statements which do not hold true for deoxyribose nucleic acid. It says A, only purine bases are present in DNA. B says deoxyribose sugar is present. C says a nitrogenous base is linked to the 1' C pentose sugar through N-glycosidic linkage. And D says phosphate group is linked to OH of 4' C of a nucleotide. So it's a very, very, very easy question. इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. I'll give you 30 seconds. Till the time I'm bringing my laptop का charger, 30 seconds, you tell me the answer. Yes, so I'm here, I'm back. तो अब मुझे इसका आंसर बताओ. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. देखो पहली चीज, डीएनए ओनली प्यूरिन बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए.
only purine bases are present in DNA? No, right? They have both purines and pyrimidines. ठीक है, प्यूरिन्स में हमारे पास क्या होते हैं? कौन बताएगा हमारे पास प्यूरिन्स में क्या क्या होते हैं? अच्छा, और प्यूरिन्स होते क्या है? दे आर डबल रिंग. प्यूरिन्स आर डबल रिंग. प्यूरिन्स आर डबल रिंग, राइट? लिख देती हूँ, डबल रिंग्ड. मैंने ऐसे याद किया था, जिसका छोटा है ना नाम, लाइक प्यूरिन्स इज अ स्मॉल वर्ड, सो दैट इज डबल, एंड pyrimidines इज अ लॉन्ग वर्ड, सो दैट इज सिंगल रिंग. एंड इसके हमारे पास एग्जांपल है ए एडेनाइन एंड ग्वानिन, ए एंड जी, एडेनाइन एंड ग्वानिन. एंड pyrimidines की हम बात करें तो दे आर सिंगल रिंग्ड, and the examples we have for this is cytosine, thymine and uracil. बट ठीक है, डीएनए में नहीं होता तो यूरासिल को हटा देते हैं. ठीक है ना? नाउ दिस इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है. डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ऑब्वियसली डीऑक्सीराइबोस शुगर ही होगी, राइट? एंड या देन a neutral sorry a nitrogenous base is linked to the 1 prime 1 prime carbon pentose sugars through N-glycosidic linkage, and phosphate group is linked to the OH of 4 prime C of a nucleotide. So देखो इसमें ना इसको कैसे करना है, अगर तुम कंफ्यूज भी हो जाओ ना तो इसमें एक और लूप होल है. लूप होल as in something that is not right. तो इसमें ना गलत चीज क्या है ये, ठीक है, दिस इज रॉन्ग. 4 प्राइम सी नहीं होता, 5 प्राइम सी होता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5 प्राइम सी होता है, करेक्ट. ठीक है, इसीलिए दिस ऑप्शन नंबर डी गलत है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. बी और सी करेक्ट हो जाते हैं. And if B and C are correct, that means our option number 1 is the correct option, as A and D are the wrong options. ठीक है, now coming to, अच्छा चेक भी करना है, चेक भी कर लेते हैं एक बार. ऑप्शन नंबर 1 is correct. ठीक है, now match list 1 with list 2. Again 1 minute to complete this answer. It says, oh ये हमने किया हुआ है ना, चलो हमने किया हुआ है तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. फोकस होता है. इतनी बढ़िया स्पेलिंग्स क्यों है इसके अंदर? ठीक है, तो चलो सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, एंड राइनो वायरसेस. तो हम चेक करते हैं क्या ए का 2 है. सैल्मोनेला टाइफी इज फॉर टाइफाइड, तो इट इज ट्रू, दैट इज ये वाला ए इज करेक्ट है ना, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, अंडरलाइन कर देते बेटर, चलो ये भी करेक्ट है, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसको मैंने वो नहीं किया, उप्स. ठीक है, नाउ बी का 4 इज बी का 4 करेक्ट. राइनो वायरस इज फॉर निमोनिया, नो नॉट करेक्ट, सो ये गलत हो गया अपने आप को. ठीक है, नाउ it only leaves us with option number 3 which is correct. एक बार चेक भी कर लेते हैं. Salmonella typhi is for 2 typhoid, rhinoviruses B is for 1 common cold, streptococcus pneumonia is for pneumonia 4, and plasmodium vivax is for malaria 3. ठीक है, so this is the correct option. ये हमने किया हुआ था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया. Now this is a passage question now. ठीक है, तो I'll give you like 2-3 minutes to read this passage itself because बहुत बड़ा पैसेज है ये. रहा पैसेज, पहले पैसेज पढ़ो, उसके बाद हम
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? Okay, read the passage. This is the passage that you have to read. I'm giving you time till 8:36. जल्दी से read कर लो उसको. जब तक I'll think of which chapter we should do today. I mean revision. अच्छा नहीं, आज तो strategies ही करना है ना, वो कल पूरा नहीं हुआ था. ठीक है, वही पूरा करेंगे tips and tricks के साथ. Are you guys done? तो ये वाला जो चैप्टर है हमने अभी अभी 2-3 दिन पहले सॉल्व किया था, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. बट ओके, लेट्स सी. एक बार फिर से. Read the passage and answer the question given below. Malaria is caused by Plasmodium parasite. This parasite is spread to humans through the bites of infected mosquitoes. When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity. When antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it's called passive immunity. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. Yep, so it says colostrum secreted by mother during the initial stage of lactation provides passive immunity as it is rich in, it says A, placental lactogen, it says prolactin, it says antigen, and it says IgA antibodies. What is the answer? Giving you 30 seconds. बहुत easy question है. इसका आंसर भी शायद देख ही लिया होगा तुम लोगों ने.
चलो, the answer for this is IgE antibodies. है ना, placental lactogen, human placental lactogen, HPL भी कहते हैं हम इसको, is a hormone which is secreted during pregnancy by the placenta along with human chorionic gonadotropin, estrogens, and progestogens. ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, HCG भी कहते हैं. Prolactin. Now, prolactin is what? Prolactin is also a hormone which is produced otherwise as well, but pregnancy के time पे बढ़ जाता है उसका production. है ना, antigen is something जिसके response to which antibodies are produced. Example, pathogen. Now this becomes the right answer. मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें इसलिए लिखी because you should also know why this answer is wrong. मतलब पता है कि wrong है, but इस मतलब इन सब का क्या significance है, as I've said कि हमेशा revision करते हुए चलना चाहिए साथ में. ठीक है. Now question number 5. Which of the following is passive immunity? Which of the following is passive immunization? Injecting inactivated pathogens, injecting antigenic preparation, injecting performed antibodies, and injecting weakened pathogens. 30 seconds. Okay. So now let's come on to this. है ना, this is not passive but active immunization. ठीक है, मतलब inactivated या weakened pathogen डालना is what? It's active immunization, right? It's like a vaccine. है ना, that's what vaccine is. Vaccine. This is what vaccine is. Now, antigenic preparation. Antigens to again then, like antigen to again pathogen ho gaya, right? So this would also be like a type of an active immunization if it would be something. ठीक है. So now this is our right option. Performed antibodies. ठीक है. Performed antibodies.
Oops. Performed antibodies. एंड ये इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, टिटनेस एंड व्हाट, स्नेक वेनम का जो एंटी वेनम होता है वो, ठीक है। मैंने एंटीबॉडीज लिखा है, ओके। सो मूविंग फर्दर, इसका आंसर है आंसर नंबर 3। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, 30 seconds. Immunity provided to the fetus from the mother through placenta during pregnancy is, अभी तो बात करी हमने, इसका आंसर क्या हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, देखो इसके दो तीन हैं, मतलब दो तीन आंसर्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली देखो क्या सबसे सही आंसर बनता है। चलो टू ब्रेक द आइस, इसका सबसे करेक्ट आंसर पैसिव इम्यूनिटी बैठता है। देखो अगर हम देखें, अगर देखा जाए तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी सेम है ना, दे आर व्हाट सेम। अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, वो अलग, वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी आर सेम। एक्टिव इम्यूनिटी इज समथिंग विच वी मेक ऑन आवर ओन, ठीक है। सो ये तो अपने आप पैसिव इम्यूनिटी बन गया, राइट। वैसे इनेट इम्यूनिटी भी आंसर हो सकता है, बट इनेट इम्यूनिटी इज नॉट एग्जैक्टली प्लेसेंटा से आई हुई इम्यूनिटी। मतलब अगर पैसिव इम्यूनिटी आंसर में नहीं है तब हो सकता है, बट अभी तो इसका आंसर पैसिव इम्यूनिटी ही है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, which is again थोड़ा similar सा question. Now tell me the answer to this. राइट, सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स होंगे, तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है।
पैसिव इम्यूनिटी भी नहीं होगा बिकॉज ये तो हम कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? ठीक है। इन्नेट भी नहीं हो पाएगा बिकॉज अगेन प्रोडक्शन हो रहा है। सो द आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, भले ही तुम आंसर पता और तुम आंसर के लिए क्लियर हो, एक बार फिर भी एलिमिनेशन डज हेल्प्स। ठीक है, इट हेल्प्स एंड यू शुड डू दैट। ठीक है, नाउ this is your next question. Match list 1 with list 2. Physical barrier. List 1 says physical barrier, cellular barriers, physiological barrier, barrier, cytokine barrier, and list 2 says saliva, interferons, skin, polynuclear leukocytes. 30 seconds इसके लिए काफ़ी easy है ये तो। तो हमेशा मैंने बोला कि जो भी सबसे इजी चीज़ लगे उससे स्टार्ट करो। सो मैं स्टार्ट करूँगी साइटोकाइन बैरियर्स है। ठीक है, उल्टा। तो मुझे इसका आंसर लग रहा है डी। चलो मैचिंग मैचिंग खेलते हैं कलर से। अ, मुझे साइटोकाइन का ऑप्शन लग रहा है। अच्छा चलो रेड कलर तो हम यूज़ करते हैं टू मार्क रॉन्ग आंसर, तो ये हम ऑरेंज कर देते हैं। इंटरफेरॉन्स। ठीक है, जो कि ये सही है, ये भी सही है, 2 और 3 दोनों में। अब मैं करूँगी फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आई वुड डू स्किन। आई मीन क्योंकि वही आंसर स्किन ही है, चटक ग्रीन स्किन। ठीक है, नाउ सेल्यूलर बैरियर सबसे इजी, सबसे इजी। पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। आई मीन सेल्स तो वही है ऐसे इस ऑप्शन में पूरे, है ना? अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बचा हमारा सलाइवा, विच इज ट्रू, इजंट इट? तो अब हम मैच करते हैं। ए का थ्री 1 और 2 में है, बी का 2, ओ सॉरी बी का 4 विच इज इन 2, सी का 1 एंड डी का 2। सो दिस इज आवर राइट आंसर। दिस इज आवर राइट आंसर। Yes, option 2 is the right answer here as well.
So now this question, 9. Identify the equation representing logistic growth of a population. इसके लिए I wouldn't give you time at all. लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें बतानी है. लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन सी होती थी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं. dt by dn rn 4 तो एलिमिनेट हो गया. 3. dn by dt is equal to n minus k upon k. ओके. dn by dt is equal to rn, ये तो exponential हो जाता. So that only leaves us with 1. So option number 1 is the correct option, which is dn by dt is equal to rn in bracket k minus n upon k. Option 1 is correct. ठीक है, ये इसका explanation भी दिया है. If you want to read, you can read it along with solving this question. Oops. चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे एंड देन इट्स फिर आप फीडबैक देना अपने कल के लिए. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. हाँ जी, wheat. What is wheat? Is wheat a false fruit? नहीं. Is wheat does wheat क्या wheat के पास albuminous seed होता है? We'll see. सबसे पहले हम I'll start with black pepper, क्योंकि मेरे ना दिमाग में ऐसा बहुत imbibed है that black pepper has perisperm left. ठीक है, तो बी का तो मैंने 1 कर दिया, जो ऑप्शन 2 और 3 में अवेलेबल है. कैश्यू इज अ फॉल्स फ्रूट. कैश्यू इज अ फॉल्स फ्रूट, ये भी बहुत इम्बाइब्ड है. ठीक है, तो सी का तो 4 हो गया, विच मेक्स इट ऑप्शन 3 एनीवेज, बट ठीक है वो करते हैं. सिट्रस इज फॉर पॉलीएम्ब्रियोनी. सिट्रस इज फॉर पॉलीएम्ब्रियोनी. एंड देन वीट बचा. वीट ऑब्वियसली देन बिकम्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो मुझे तो इसका राइट आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर 3. एक बार चेक भी कर लेते हैं. ए का 3 राइट, बी का 1 राइट, सी का 4 राइट एंड डी का 2 राइट. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप इट्स लाइक नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, एंड यू गाइज अग्री कि दिस इज द राइट ऑप्शन एज वेल. So this was all for today questions में. Oops. ठीक है, आई होप किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अभी बता दो, सॉल्व कर लेंगे. एंड उसके पहले 2 मिनट का ब्रेक. 9 पे we'll restart with strategies का लेफ्ट ओवर पार्ट. आई होप दैट्स नॉट एन इशू. So 2 minutes break because I don't see any problem here. Till the time I'll open the PDF obviously.
Okay, so break over and चलो फिर let's start studying. ठीक है, तो plants for developing resistance of insect pests. So another major cause for large-scale destruction of crop plant and crop is insect and pest infestation. ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो कि insect resistance in host crop plants किस किस से बनाया जा सकता है. Yes, I'm extremely sorry. किस किस से बनाया जा सकता है. सो इट कैन बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. ये हम उसमें भी पढ़ते हैं प्रिडेशन में, है ना. In wheat, solid stem leads to non-preference by the stem stowfly, and smooth-leafed and nectar-less cotton varieties do not attract bollworms. ठीक है. Then high aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize leads to resistance to maize stem borers. ठीक है, ये सब याद रखना. It's an example. Example है ये सारे examples. ओके, सो ब्रीडिंग मेथड्स हैं हमारे, और ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये सब पढ़ लेना. सो ब्रासिका इज रैप्सिड मस्टर्ड. इसको हमारे पास वैरायटी है पूसा गौरव एंड दिस इज फॉर एफिड्स. फ्लैट बीन पूसा सेम 2, पूसा सेम 3. जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर. ओकरा भिंडी, इसकी हमने वैरायटी निकाली पूसा स्वामी एंड पूसा A4 दैट इज फॉर शूट एंड फ्रूट बोरर. ये वाली जो टेबल है, देखो, अगर जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं इस टेबल के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तब तक मैं बनाऊंगी नहीं. ठीक है, तो अब मेरे को अगर किसी को चाहिए होंगे तो कमेंट करना, या फिर मतलब ऐसे बताना कि चाहिए, तो मुझे पता कैसे चलेगा आप लोगों को चाहिए. मैंने तो नहीं बनाई थी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑनेस्टली, तो इसीलिए मेरे पास अभी है नहीं, तो मुझे बनानी पड़ेगी. या अगर आपके पास हो तो दैट ऑल्सो यू कैन टेल. ठीक है. नाउ फूड क्वालिटी के लिए जब हम करते हैं मॉडिफिकेशन, इसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन का एक एग्जांपल हमारे पास है विटामिन ए रिच राइस. उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस. ठीक है, क्या कहते हैं, गोल्डन राइस. यहाँ पे होगा शायद. ठीक है. सो व्हाई डू वी डू न्यूट्रिशनल क्वालिटी के मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी इम्प्रूव करना, ऑयल कंटेंट क्वालिटी इम्प्रूव करना, विटामिन कंटेंट इम्प्रूव करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट इम्प्रूव करना. ठीक है. दिस नाउ आयरन फोर्टिफाइड राइस है हमारे पास कंटेनिंग 5 times as much iron as commonly consumed varieties. नाउ हमारे पास है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. तो सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक सेल का प्रोटीन होता है विच इज एज न्यूट्रिशनल एज अ होल कोर्स मील. ठीक है, बहुत न्यूट्रिशनस होते हैं और वो हंगर को मिटाने के लिए हमारे पास है. तो ये स्पाइरुलिना है, ये क्वेश्चन भी आया था PYQ में. ठीक है, and this is a micro, and this can easily grow in wastewater from potato processing plants containing starch, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantities, and can serve as food rich in protein, mineral fats, carbohydrates and vitamins. Incidentally, such utilization also reduces environmental pollution. है ना? So this is like a very 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 important discovery या invention that happened. ठीक है. नाउ वी कम टू टिश्यू कल्चर. व्हाट इज टिश्यू कल्चर? तो पहली बात तो एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप अप विद द पेस एंड डिमांड एंड प्रोवाइड sufficiently fast and efficient systems for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. So what does tissue culture mean? So it was learned by scientists during 1950s. Important. ठीक है, that whole plant could be generated from explants. Explant क्या होता है, any part of the plant that taken out and grown in a test tube under sterile conditions in special nutrient media. ठीक है, this capacity to generate a whole plant from any cell explant is known as totipotency.
और इनको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है। Now we have other options like other examples of tissue culture as well. तो हमारे पास होता है जब this method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. Each of these plant will genetically be identical to original plant from which they are grown. That is, they are soma clones. Soma clones क्या होता है? Original plant से genetically identical. क्या? Genetically identical to soma. Genetically identical to soma clones. ठीक है. सो अगेन मेरिस्टेम क्या है हमारे पास, ये आपको पता है एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम जो होती है। तो ये जो होता है ना प्लांट का, ये इन्फेक्टेड ये जो लाइक ये जो होता है मेरिस्टेम दैट इज फ्री ऑफ वायरस, दिस इज लाइक वायरस फ्री, ठीक है। सो one can remove this meristem and grow in vitro to obtain virus free plants, ठीक है। ये PYQ भी था, so you should remember। and एक और चीज़ होती है somatic hybridization, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसका पोमैटो। पोमैटो इज रिजल्टिंग लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, इट्स अ रियल थिंग। तो अगर किसी ने भी ये सोचा होगा कभी ज़िंदगी में कि ऐसा कुछ होता है, टमाटो पोटैटोज पोमैटो एंड समथिंग, सो यस इट्स ट्रू, इट इज़ देयर, ठीक है। बट एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। So basically, scientists have isolated single cells from plants and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplasts. ठीक है, isolated protoplasts from two different varieties of plants, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplast. And hybrid protoplast से हमारे क्या बन जाते हैं, somatic hybrids. Now this is the summary. एक बार summary read करके हम खत्म करेंगे आज का lecture. So animal husbandry is a practice of taking care and breeding domestic animals by applying scientific principles, right? इसके अंदर क्या क्या आता है, management of farm and farm animals, animal breeding, right? In view of the high nutritive value of honey and its medicinal importance, there has been remarkable growth in the practice of beekeeping or apiculture. Fishery is another flourishing industry, meeting the ever-increasing demand for fish, fish products, and other aquatic foods. Plant breeding may be used to create varieties which are resistant to pathogens and to insect pests. This increases the yield of the food. This method has also been used to increase the protein content of the plant food and hereby enhance the quality of food. In India, several varieties of different crop plants have been produced. All these measures enhance the production of food. Techniques of tissue culture and somatic hybridization offer vast potential for manipulation of plants in vitro to produce new varieties. ऑलवेज एंड ऑलवेज रीड द समरी, एक बार सब पता चल जाता है और रिवाइज कर लेते हो। लाइक जैसे अगर मैं पढ़ूँ एनिमल हस्बेंड्री, हाँ तो मैं जो डेफिनेशन थी फर्स्ट पेज पे उसको रिकॉल करने का ट्राई करो, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। Thank you so much everybody for joining and for your responses. We will now meet tomorrow with a new chapter and jaldi jaldi karna hai ab since only 20 days are left for CUET, right? So we'll do everything very fast. So with more questions and a new topic, we'll meet tomorrow. Until then, good luck for your exam. Goodbye, and I hope that all of your preparation is going well. And check out the mock test series or the crash course available on ExamFactor's website. And goodbye, and good night also. Good night. Bye.